It was the script. The script was so wonderful, and what is so special is that when I've seen the film 3 times already, and I love it. And everything that जो हमें promise किया गया था, जो script में था, Rahul has been able to execute it exactly like that, if not better. So the script is beautiful, the dialogues are beautiful. I just had to do it. Thank you so much. Definitely. हम सबकी आंखों में वो चमक थी ना उसको ट्रेलर देखने के बाद. It indeed is very very beautiful. Ladies and gentlemen, please once again round of applause is here for Sharmila ji. Thank you so much. Now coming to you मनोज जी. मूवी ऑलरेडी बहुत ही चर्चे में है और आप हमेशा तो चर्चों में रहते ही हैं अपने काम की वजह से. इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, what was your family's reaction when they came to know that you are sharing screen with Sharmila ji? You know, at this point, that's a very good question. Nobody asked me this, but you know, I'm at the cost of repeating myself. I have seen Shamlaji's film Dark, and my father was quite a film buff. So was my mother, and so I have very kind of a blurred memory of that film, but I remember the song. And I used to tease Shamlaji of the time with that song. One day she said, if you sing it one more time, I'm going to kill you. So, you know, from that childhood time to this time, I'm sharing the camera, sharing the stage with her. It's quite, I mean, definitely it's a privilege, but it's also kind of a miraculous experience for me. I mean, a village boy, you know, saw someone on the silver screen, and now you are sharing the platform. That's quite an honor. Definitely. We also are eager to see you both in the same movie, in the same screen. Thank you so much. And over to Simranji. So as put forth by Rahul here that you are playing his favorite part, right? So I would love to know that how it actually felt to play the role of Indu with the special Batra family. कैसा लगा आपको? सबको नमस्ते. बहुत सालों के बाद मैंने हिंदी में काम किया. इतने सालों से साउथ में हूँ, काम कर रही हूँ. बहुत अच्छा लगा. जैसे राहुल ने मुझे स्टोरी सुनाई थी 2 साल पहले, एक सीन एक डायलॉग वही था. और ऑफ कोर्स लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला जी के साथ में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला. ग्रेट परफॉर्मर, सुपरस्टार मनोज जी के साथ में काम करने का मौका मिला. सूरज के साथ काम करने का मौका मिला. राहुल आपके साथ, पूरी टीम के साथ काफ़ी मज़ा आया. फैमिली की तरह हमने फिल्म शूट करी. सेट पे खाना, डायलॉग्स, आज भी निहारी बना रही है. तो बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों के बाद. नाइस. और आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. शर्मिला जी, माय मदर हैज बीन अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ऑफ कोर्स माय फादर टू. एंड यू नो व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी वर डूइंग दैट सीन टुगेदर एंड व्हेन यू वर डिलीवरिंग द डायलॉग, उसके बाद मेरा डायलॉग था, मैं अपनी लाइंस भूल गई. और देन आई हैड टू शेक माई सेल्फ अप बिकॉज ऑफ कोर्स ये मेरे साथ रजनीकांत जी के साथ में जब मैं काम करती तब हुआ था. और मतलब बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू डिज्नी हॉटस्टार विक्रम जी. थैंक यू. Thank you so much. I can totally second this. You know, I felt the same just as you when, you know, I was told that Sharmila ji is going to be there. You have to actually make yourself up that she is going to be there along with you, Manoj sir. Definitely. आपसे बातें करके ये लग ही रहा है कि एक्टर्स नहीं खड़े हैं, पूरा परिवार साथ में खड़ा है. और आप मानोगे नहीं, कोने कोने में यहाँ शॉट चल रहा है, मैम यहाँ बैठी, मैं यहाँ से वहाँ से मैं उनको देख रही हूँ. You know, seriously. मेरे लिए भी अभी वो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है. Definitely. So guys, definitely bright side. Right? It is definitely your bright face, man. So finally, so happy to have you here with us, and finally coming to you, Suraj. आप तो दिल्ली वाले हैं, so we are eager to know that what felt so special that this दिल्ली वाला came on board for Gulmohar. एक तो मेरे को हाय एवरीबॉडी, मेरे को कभी चांस नहीं मिला कभी दिल्ली में शूट करने का, तो मेरे को वहीं पे बहुत खुशी हुई थी. आई सॉ ऑल माय फ्रेंड्स,
as we shot, I was eating my favorite food. हम लोग खान मार्केट के साइड में मैं सरदार पटेल गया था तो मतलब वो भी है साथ साथ. Obviously I get to work with this incredible group. मतलब अलग ही था. और एक बहुत जो स्पेशल चीज़ थी मेरे लिए, मैं और मेरा my brother हम लोग ने पहली बार एक साथ मूवी किया है इतने सालों में. और मेरा जो करियर है वो उसी की वजह से बना है in the first place. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल, इतने लेवल्स पे स्पेशल था मैं बता नहीं सकता था किसी को. But hopefully it's special to you guys too. It's definitely special to us. It definitely feels special to us. Ladies and gentlemen, once again, round of applause here. The generation, no, my family self hasn't seen it because he's shooting in Amritsar. But Sarah saw it yesterday. Sabah, Soha have seen it. Karina is seeing it on the 28th, tomorrow. So they've all seen it. And they are very, very supportive and they love it. And Sabah has loved it. Like she wants to come and see it again with a notebook to write down all the dialogues. Because, sometimes we speak the dialogues, but फिर वो ठीक से याद नहीं होता. I can't just repeat verbatim. So she's loved the film. So everybody in my family, so far, whoever's seen it, has loved it. Actually, there hasn't been in my friends. Yesterday we had a screening, and there were, and you can make out when somebody's faking it, somebody's saying "हाँ बहुत अच्छा था." You can see that they're being formal, or at least I can. And here they were just genuinely loved it, and all day I've been receiving messages. So it's really touched people, So yeah, it's been such a privilege to work in this film. Really, it's been I've worked for the last 60 years, but it's a unique experience. Really, at this stage of my life, I value it so much more because everything becomes more intense with age. As you grow older, you want the very best. You don't want to, you can't settle for less. And I am so happy and proud that I've been able to be part of this wonderful film. Thank you. No, but really the honor was ours because the moment I would tell people, including Manojji, he was the second actor I went to after Sharmila ji. The moment I would tell people that Sharmila ji is playing Kusum, I think they didn't want to read the script. They just said, yes, we would do it. And a funny anecdote, someone asked you, I must say, we were shooting in this house. It's all shot in real locations. And the owner of the house, this rich, super rich man from Delhi, he would literally stand outside the bungalow protecting her car so that the car gets a spot to park. And from day to night, he would just stand there. So this is the love and the admiration that we have for Sharmila ji. And I thank you. It's because of our medium, It has reached not just here, but globally, New York, wherever I go, sometimes the taxi people won't take money. When we go and buy something, they'll say, "Nahi, aapke liye, ye to aap le jaiye." I mean, it's so much goodwill, Manoj, we create when we go out there. And of course, there are criticism, but I think the goodwill overshadows the criticism. So when you've been there in front of them in a glass house, everybody has seen you through ups and downs, your mistakes, your success. So it's an open book. And they form an attachment with you. And I think it's a genuine, because earlier I used to feel, why is everybody saying that? I can see myself in the mirror, I'm not the same. But, when people say it, you have to accept it with humility, because they mean well and they have that genuine affection for you. And who am I to say, no, I don't deserve that. But yes, so I think this is the magic of cinema, that it can create so much goodwill in our audience. I have a question each, one for Manoj sir and Suraj, being actors from different generations. Manoj sir, we all know that you have been a trailblazer and your struggle has been, something which has inspired so many. But nowadays, the struggle is becoming easier because the new mediums that are coming in, digital has come up in a big way. So when you look at actors like Suraj, and you see that, the opportunities that they get today are far more. Do you think that had this medium been there in your days, the struggle would have been a little shorter, from Bandit Queen to say Satya? Do you think, if you look back at the journey? No, each time the world keeps changing in every two decades.
technological revolutions. It keeps happening. It keeps upgrading itself. I can't, take a pause and think what would have been had this been that time. No, I mean that's a very wrong way to go. All I would say that yes, industry today is far more organized. If right, Shimla ji, far more organized, far more professional uh, than it was when I arrived in Bombay. There was no casting director. There was no concept of casting directors. Today, if you are uh, talented, if you are skilled, if you know your job, you have ability, in 1 year you will have 2 3 jobs. That's the beauty of this time. Um, and with the digital revolution, what it has done that it created so many platforms for the talents to express themselves, and which is a very good thing. I'm also kind of making a lot of benefits out of it. Today, I'm far more busier than I ever was. Earlier, one good script used to come, in 6 months or 8 months, sometime 1 year. So because there was only one medium, cinema in theater. But now you have films on OTT, and there are so many OTT platforms. There are so many new directors finding jobs. They are raring to go. They are desperate to tell their stories, and for their own stories, they want to meet the actors who are right for the characters. So Suraj, uh, yes, you are right. Suraj coming in this time, growing up in this time, in his 20s in this time, he's at an advantage. He's a skilled actor. He's a talented actor, and he's getting that respect from the beginning. Absolutely. So, is the time which is benefiting him in one way, and it is I'm at an advantage in some other way. So we really can't compare it, and take stop everything and start thinking what would have been if this would have been. That is, this is ये समय बदल चुका है, और उस समय में जो सबसे बड़ी खासियत थी जो इस समय को नहीं है, वो भी देखनी चाहिए. वो उस समय की खासियत थी कि हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मैं 10 साल थिएटर कर गया और हमें पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन हमने थिएटर किया, हमने इस स्किल को बहुत सीखा. हमारे पास बहुत समय था क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, कोई और मीडियम नहीं था, तो उसका एडवांटेज भी था. आज वो एडवांटेज नहीं है. सूरज चाहे भी तो 1 साल के लिए छुट्टी नहीं ले सकता है. प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उसका जीना हराम कर देंगे. He can't have this luxury because he will have some offers which he will, he'll definitely not like to let it go. So there are many advantages to be working in this time. There are few advantages when there were no platforms. Thank you so much. You couldn't have answered it better. Suraj, the question for you is that you have worked with two of the finest actors of their respective generations. Sharmila ma'am, we all know she's an institution in herself, and Manoj sir, who has been such a great role model for actors of so many generations ever since, he walked and, changed it all with Satya and all that followed. What were your learning experience, and how intimidating it was for you, to work with each of them and, to share the screen space with them, and what were the learnings that you would take away with you? In as far as the learning is considered, there was a lot of learning. Obviously, they both have been doing this for a long time and they're extremely skilled people. But I will say there was no nervousness because at the end of the day, बड़े सारे किस्म के actor होते हैं, but both of them at the end of the day love to act. They love it. तो उस मामले में बहुत easy हो जाता है फिर सब कुछ. You go in there and you give it your best. They see that they're doing their best, and together you're a team. कुछ उसमें nervousness की बात ही नहीं है. बहुत आसान हो जाता है उल्टा. So well said, yeah. है ना? When you're acting with people who are so good, it's freedom. उल्टा है actually. तो हाँ. Thank you so much. Students of the craft, really. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. गुलमोहर का ट्रेलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. सिमरन, मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगी. सबसे पहले आप
साउथ में काम करते हो। अभी लास्ट रॉकेटरी इतनी ज़्यादा फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था, आपके काम को इतना पसंद किया गया था, बट गुलमोहर जो है वो OTT के लिए है। तो कहीं ऐसा डिफरेंस लगता है कि ठीक है फिल्म्स में ज़्यादा इजीली हो जाता है, OTT के लिए अलग है, कितना मतलब डिफरेंस होता है? और सेकेंडली साउथ वर्सेस बॉलीवुड भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्सेस में चला था, अभी तो थिंग्स पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी कहीं वो ऐसा डिफरेंस है साउथ और बॉलीवुड और OTT के लिए? I think OTT has connected the world together. So, जो टैलेंट हमें पहले नहीं दिखने को मिलता था साउथ से हिंदी के लिए और हिंदी से साउथ के लिए, अब OTT उस चीज़ को साथ में ले आया. तो रॉकेटरी वॉज येस वन ऑफ माई फैंटास्टिक मूवी, nice movie, but Gulmohar is something, you know, it is about family, and it drives me to get more unity, more togetherness, more support to my family. So theatre और OTT और नॉर्थ और साउथ के ये सारे differences, जैसे हम अपनी फैमिली में डिफरेंस होता है तो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके उसे दूर कर देते हैं, जो गुलमोहर में है, तो ये सारे OTT, थिएटर, TV, साउथ नॉर्थ के डिफरेंसेस अभी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक OTT हैज़ गिवन प्लेटफॉर्म टू मेनी टैलेंट्स, एंड टैलेंट की कोई सीमा नहीं है. लैंग्वेज इज़ नो बार फॉर टैलेंट. सो यस. शर्मिला मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बचपन से आपकी फिल्में देखते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने आपकी फिल्मों को इतना पसंद किया है, हम लोगों ने 90s का जनरेशन जो था वो तो आप लोगों की फिल्मों का अलग ही फ़ैन है पूरा, बट आपने आप इतने सालों के बाद आपने कम बैक करा, तो जब आपने फर्स्ट डे जब आप शूट पे पहुँचे तो पुरानी वो सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई, वो पहला मोमेंट आपका कैसा था? It just felt wonderful, you know. Your muscle memory or whatever you call it, it just takes over. When you come in front of the camera, you feel that you've never left. You've not, you feel very comfortable because you've been doing it for so long that you're so comfortable with the camera. Like for the theatre people, it's the audience that matters. We don't see live audience because only when we go to the cinema we see them. Otherwise we don't know how they're reacting. These people, they can see that अच्छा यहाँ पे बोर हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए, ये लाइन ठीक से नहीं हो रहा है, so they can experiment. तो next show they will change there. हमारे साथ तो ऑडियंस का कोई वो ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है. So हमारे जो भी है interaction is with the camera. So it's a wonderful thing because we can, when we are performing, we can see ourselves performing, you know, I can hear my own voice, I can see my own expression. And then if something is not right, then we tell the director says no, and the director is the boss. If he says okay, it's okay. So etc. So I didn't feel anything strange in front of the camera. If anything, that from start sound to cut. So यहाँ पे, the first day, may I share? Because I only work in films. So this was my first OTT film. And so start, sound, camera, and I thought it was action. So I started speaking. Uske baad there was somebody else said something else, somebody else said something else. There was 3-4 lines of communication. And then, of course, it was my turn to speak. So that was a very new thing that I learned very quickly. So it's a difference here, but otherwise film is a film. And it was just lovely because from the start sound, even the OTT start, whatever action, to cut is the moment we live for. All us are actors. Usi mein aapko jo karna hai, aapko karna hai. Because that is recorded and that goes into the film. Then you can't change it. You can't, for theatre, you don't get a second chance to do it better. So that is everything for us, that moment. And that moment you're playing somebody else, like I become Kusum or I become somebody else. So that is such a magical moment. I cannot share that with anybody because that is the moment
I live for. Welcome all over here. This is Seema Dhawan from Retro Pop Lifestyle Magazine. My question is for you, Rahul. So this film is definitely about the fractured relationships and how I'm sure that there would be a reunion also about the family after realizing the importance of the family bond. So what about the title? Gulmohar is certainly the name of a flower. So how did you choose the title, and was everybody convinced with your title? I think so, because it's such a beautiful word. You hear the word and you remember Gulzar Saab's songs to begin with, which brings a smile to your memory. It's very nostalgic, and there's some amount of mystery in the word, and it's very Delhi, because you drive down the streets of Delhi in a particular season, you'll see the trees of Gulmohar blooming on either sides, which is so beautiful. So very early on, my co-writer and I, Arpita Mukherjee and I, we decided on the word Gulmohar, because I love the flower and I love, Gulzar Saab's song, Gulmohar Gar Tumhara Naam Hota. I love that song. And while we were writing it, we were convinced that the name of the film should be the name of the house. And that's how the title. Actually, he probably knew that the film was going to release in March. And yeah. very soon Delhi will be full of Gulmohar trees. Flowers, yeah. Manojji, you told about the song of Dag, which you used to sing. Can you tell about that song? Which song is that? I didn't change the song now. We sang other songs as well. Yeah, there are too many songs, but the song that I always remembered was "जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं." वो गाना मैं जब भी गाता था, शर्मिला जी जो है, 2 दिन तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि अगर अब गाया तो मैं तुम्हारी जान मार दूंगी। उसके बाद मैंने चेंज किया, हवा चली कैसे। तो शर्मिला जी ने कहा कि मनोज, ये भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं साइंस टीचर का रोल कर रही थी उस फिल्म में, और टीचर को ही नहीं पता है कि हवा कैसे चलती है। हेलो गुलमोहर टीम, दिस इज करण शर्मा। सर, मेरे 2 क्वेश्चन है, एक मनोज सर से और एक सूरज सर से। मनोज सर, आपने रिसेंटली एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें आपने अपना पुश्तैनी घर दिखाया था। उसमें एक मोमेंट आता है जिसमें आप बताते हैं, यहाँ से मैं लड्डू चुराता था, पेड़े चुराता था। सर, लेकिन बाद में आपने ये नहीं बताया कि पिटाई कितनी होती थी मम्मी से। मैं बहुत ही जिद्दी स्वभाव का आदमी था, वेरी स्टबर्न। मेरे ख्याल से वो स्टबर्ननेस मुझे यहाँ तक लेके आया। नहीं तो लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो अब मेरी माँ, हर कोई कहता है कि मैं जैसी मेरी माँ थी वैसे ही मैं भी हूँ। वो भी बहुत ज़िद्दी थी और मैं भी बहुत ज़िद्दी था, तो क्लैश ऑफ स्टबर्ननेस था बेसिकली। वो कहती थी ये करो और मैं कहता था कि मैं नहीं करूँगा। और पेड़े जो है मैं चुरा लेता था। दही का जो है ऊपर का जो लेयर होता है वो मैं सारी दही जो है छोड़ के ऊपर का लेयर चुरा के खा जाता था। घर में 6 बच्चे थे, तो मेरी माँ को तो वो भी देखना था कि सबको बराबर बराबर जाए, तो मार बहुत पड़ती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। और मुझे उन्होंने 3rd स्टैंडर्ड से एक लॉज में डाल दिया था स्कूल में, मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था। वो मेरे लिए बहुत ही डार्क पीरियड था, बिकॉज मैं रहना नहीं चाहता था वहाँ पे। तो मेरी माँ को पता नहीं चलता था कि ये जाना क्यों नहीं चाहता है वहाँ पे, इसका भाई तो चला जाता है। लेकिन मुझे जो है वहाँ पे मुझे बिल्कुल मेरी एक्सपीरियंसेस अच्छी नहीं होती, तो मेरी माँ बहुत मारती थी जब भी जाना होता था। एक बार मैंने कमरे में घुस के दरवाज़ा लॉक करके, जहाँ से खिड़की खुली हुई थी, तो मेरी माँ कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, तो वहीं पे एक सब्जी चलाने वाले, क्या बोलते हैं उसको, करची जो बोलते हैं, वो उठा के मैंने अपने पेट में मार लिया ऐसे करके, और मैंने कहा आ करके गिर गया वहीं पे। और मेरी माँ को सच में लगा कि इसने अपने आप को मार लिया। तो मेरे पिताजी कहते हैं, जब वो बुजुर्ग हुए पिताजी, तो मैंने कहा पिताजी से कि आपको कब लगा था कि मैं एक्टर बनूंगा? उन्होंने कहा जिस दिन तुमने वो नाटक किया था। Alright, can we have last 2 questions please? सूरज सर, आपसे क्वेश्चन था, अमेरिकन सिटकॉम में रिसेंटली आप काम कर रहे हैं, हाउ आई मेट योर फादर में और लाइफ ऑफ पाई में भी आपने काम किया है, पर आपने इच्छा जताई थी कि मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। लेकिन आज के टाइम में जहाँ हर कोई हॉलीवुड जाना चाहता है, आप अपनी रूट्स पर वापस आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैं वैसे सोचता नहीं हूँ कि अगर
यहाँ से वहाँ जाना है कि वहाँ से यहाँ जाना है। मेरे लिए बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टोरी है ना। मेरे को स्टोरी से बहुत प्यार है, मेरे को मूवी से बहुत प्यार है। मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ बन रही है ये चीज़। ऑब्वियसली जब इंडिया में बन रही होती है थोड़ा ज़्यादा इमोशनल रेजोनेंस है मेरे में, ठीक है, ऑब्वियसली। बट जनरली मैं कभी ऐसे सोचता नहीं हूँ। मेरे लिए क्या है कि स्टोरी कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, और जो जिनके साथ मैं काम करने वाला हूँ वो कितने कोलैबोरेटिव हैं, उसके आगे मैं ये सोचता ही नहीं हूँ। ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे ज़्यादा काम करना है, वहाँ पे भी मेरे को ज़्यादा काम करना है, मेरे को तो काम ही करना है बस। तो बस मेरा वहीं तक है। मनोज सर, हिमांशु दिस साइड। सर ये एक फैमिली आपकी गुलमोहर फैमिली है जो बहुत ही सादगी से रहती है, आप जिन्हें संभाल के रखते हैं, और एक फैमिली मैन वाली आपकी फैमिली है जिनमें थोड़ा सा आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। सर फैमिली मैन की जब भी जिक्र होता है सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है क्योंकि फैमिली मैन 3 का बहुत जल्दी से वेट है। तो थोड़े से अगर आप शब्दों में बता दें कि क्या उसका अपडेट है। और सेकेंड थिंग सर, अभी थोड़े 1 वीक पहले फर्जी देख रहा था, तो एकदम से आपकी आवाज़ आती है तो रिवाइंड करने का मन करता है, 2-3 बार सुनने का मन करता है कि ये कौन है, जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। चिल्लम सर की एंट्री हो चुकी है और कहीं ना कहीं सभी चीज़ जो है फर्जी का आपके फैमिली मैन 3 से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाला है। और रिसेंटली आपने नंबर भी शेयर कर दिया था चिल्लम सर का, तो बहुत ज़ोरदार प्रमोशन है, बहुत बारीकी से किया जा रहा है। सर थोड़ा सा अगर आप अपडेट देते तो। अभी उसके बारे में क्या बोलूँगा जी, मतलब गुलमोहर के साथ अन्याय हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको कि सीज़न 3 का मेरे ख्याल से राज इंडी के और अमेज़ॉन की तरफ से जल्दी ही कुछ आपके लिए अच्छी खबर आएगी, ऐसा लगता है मुझे। और जहाँ तक बात है इस फैमिली की, तो इस दोनों फैमिली में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों काम और परिवार में बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है, और ये आदमी इसके लिए फैमिली सबसे बड़ी चीज़ है। ये बैलेंस भी बिठाना नहीं चाहता है, ये सिर्फ चाहता है कि फैमिली साथ में रहे, और उसके चक्कर में क्या क्या होता है, उन साल वो क्या क्या और चीज़ें उससे बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बट सिंस इट्स गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, यस, सो ऑल आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए हमें कवर करने के लिए, हमसे सवाल जवाब का ये सेशन करने के लिए। दूसरी बात ये कि दिस फैमिली हियर needs your support. Thank you.